अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ. ओके, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच सो दैट दोज हु हैव रिसेंटली ज्वाइन विल अंडरस्टैंड. हम डिस्कस कर रहे थे P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव. कॉस फाइव इज कॉल्ड पावर, राइट. इंडक्टर के लिए और कैपेसिटर हो तो उसका पावर फैक्टर कितना होता है? ज़ीरो. दैट मीन्स इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर पावर कंज्यूम्ड इज ज़ीरो. ओके, आइदर लीड और लेग होता रहता है. बट इन अ सर्किट लाइक दिस you have got a bulb, any load it could be connected in series with inductor, long transmission line and power source, right. तो उसमें पावर फैक्टर का एक दिक्कत आएगा. क्या दिक्कत आएगा? सो इफ से वोल्टेज फेजर आई एम शोइंग along x axis, then current phasor there is no phase difference, so I have to show it along x axis. So this is IR. Now current lags behind by pi by 2, so I am showing it downward. So what is effect? What is total current in the circuit? I. Okay. So now I is split into two parts. Current through resistor is IR and current through inductor is IL. Now this current is not responsible for doing any power because it is powerless current. We can say it is wattless current. So which current will make the bulb glow? IR. Now that value is less. जैसे cos फाइव बढ़ता जाएगा, ये दिस वैल्यू ऑफ फाइव वुड इंक्रीज, तो IR का वैल्यू कम होता जाएगा, राइट. नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos फाइव? आइदर यू कैन राइट VR by V, that is IR by I into Z, Z for impedance, which is in this case root of R square plus XL square. Now if cos phi decreases, so if phi increases, then cos phi decreases. Cos phi decreases, the power also decreases, power factor decreases, because power formula is Vrms Irms cos phi. If cos phi का वैल्यू कम है, इसका मतलब पावर डिसिपेटेड इन योर सर्किट इज लेस. इसका मतलब ये हुआ कि बल्ब विल नॉट ग्लो ब्राइट. ओके, सो प्रेजेंट सिचुएशन इज दैट बल्ब इज गोइंग टू ग्लो डिम. क्यों डिम हो रहा है? बिकॉज IR इज लेस. ओके, इट मीन्स वैल्यू ऑफ I इन द सर्किट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, बिकॉज I का प्रोजेक्शन जो है ये ऐसा है, दिस इज I और इसका प्रोजेक्शन जो मिल रहा है दिस IR. दिस इज डूइंग यूजफुल वर्क. सो इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस यू हैव टू इंक्रीज I, राइट. इट मीन्स यू हैव टू पास मोर करंट थ्रू द वायर. तो वहाँ दिक्कत क्या आएगी? वायर का खुद का रेजिस्टेंस होता है I स्क्वायर, खुद का रेजिस्टेंस होता है R. सो पावर लॉस इन द वायर विल बी I स्क्वायर R. सो थोड़ा भी करंट बढ़ाया, so joule is going to be tremendously more, so that energy is wasted and that is power loss. So what should be the condition ideally? Cos 5 should be 1, then it is good. If it is tends to 0, that is not good. Okay, how it can be solved? So along with the inductor, if I put capacitor, then phase diagram अभी ऐसा बनेगा. This is voltage phasor, this is current phasor, parallel to that inductor phasor downward, capacitor phasor upward. Now if I choose value of L inductance and value of C such that IC and IL are equal in magnitude but they are opposite direction, so net effect becomes 0. So this is now your actual current, and now phi is 0, cos phi is 1, power factor is improved. So there were two options: increase the current, but that will lead to joule heat, that's not good. But with the help of a series capacitor we can get a solution of that. So that could be done in power savers. Okay, now coming to that power saver, how do they work? Those who are interested in technology, it's a small kind of box available in the market, right. ऐसा बॉक्स होता है, उसकी दो पिन होती है, इसको प्लग में लगा दो, दैट्स इट. तो पावर सेव कैसे करता है? बेसिकली इट्स ए कैपेसिटर बैंक. व्हाट इज इट?
capacitor pair, means many capacitor in parallel. Now what happens, your fan, your AC or your refrigerator, they are kind of inductive load. They run on motor, they are called inductive load. Why it's called inductive load? Because there is a coil. Coil acts as an inductor. Okay, so what they are planning is to do that when you have got inductive load, parallel to that if you put a capacitor, then also you can make phi 0, and then cos phi becomes 1, and then power factor is improved, then power is more. Okay. Yes, because all these devices, all fans are in parallel, AC is in parallel, refrigerator. So in parallel to that if you put capacitor, then also it's going to work. But actually it's not going to work. Right? Theoretically it is correct कि पावर फैक्टर अच्छा हो गया, right? लेकिन ये L and C, L वैल्यू विल कीप ऑन चेंजिंग. आप अलग फैन को ही यूज़ किया है, इंडक्टर कैपेसिटर, ये आपका AC चालू नहीं है, रेफ्रिजरेटर चालू नहीं है, तो इंडक्टेंस वैल्यू इज़ लेस. तो उस टाइम पे आपको C वैल्यू इज़ ऑल्सो, यू रिक्वायर लार्ज वैल्यू ऑफ C. जो व्हेन मेनी डिवाइसेस आर स्विच्ड ऑन, इंडक्टेंस वैल्यू इज़ लार्ज, तो C का वैल्यू फिर कम करना पड़ेगा. It should be a variable capacitor, because what you need is basically resonance. We are going to discuss in next part. So ये डिवाइस आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इट्स गॉट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ C, तो काम नहीं करने वाला ये है. दूसरा, ये आपका मीटर जो है इलेक्ट्रिक मीटर, वो तो जिस स्पीड से घूमना है उसी स्पीड से घूमेगा, उसका स्पीड तो सेम रहेगा. ये पावर सेविंग किसको होगा? MgVCL को पावर सेविंग होगा. आपका मीटर तो जितना घूमता है उतना ही घूमने वाला है, राइट? तो इसके लिए थोड़ा और टेक्निकल स्टफ हो जाएगा. नेट पे थोड़ा सर्च करना, थोड़ा समझ में आएगा आपको अभी इतना टॉपिक पढ़ने के बाद कि दिस पावर सेविंग्स आर बिग होक्स, HOAX. इट डजेंट वर्क. अगर ऐसा ही होता तो MgVCL वाले आपको नहीं सप्लाई करते कि चलो ये लगाओ और अपना इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, बिकॉज ऑलरेडी इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन इज लेस. ठीक है. ओके. नहीं होना है. दिस डेज आई एम डैम बिजी, आई एम डूइंग एवरीथिंग एल्स. means many things I'm doing simultaneously. So back to back work is there, but we'll continue. We have got still some time. So whatever I have explained, no, in that light you try to understand the answer of this question. Now let's solve 7.8. You have got series LCR circuit. We have all three components present for the first time. A and B I think we have done. C and D we have to find now. Good job. हाँ, तो प्रभुजी's and Mataji's, how will you find power dissipated in the circuit? VRMS, IRMS, cos phi, right? तो इसके लिए पावर फैक्टर तो D पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. So look at that in the solution. Cos phi. I'll come to that point. Power factor is cos phi. Phi was already found in
answer B. Answer is 0.6. So this is not a good circuit. It should be close to 1. Okay, then therefore power dissipated in the circuit is I square R. I is IRMS. Remember, it is not written I and then in suffix RMS is not written, but it is understood to be there. It is always RMS value. RMS value is not given, but you can calculate by IM by root 2, which is 40 ampere. They got an answer 4800 watt. Okay. Then what I was been saying, can we use that formula? P equal to VRMS IRMS cos phi. You give it a try, you get same answer. Okay. Now you can also write this as, this is IRMS R into IRMS cos phi. So there are many ways you can solve it, but given the fact what data is given to you, voltage, peak value is given, so from that you can find Vm. Okay. Then you can write Vm square by R also. What happened to inductor and capacitor? Their values did not used in the finding the power. They use I square R, or one can use V square by R. Then what is use of L and C? What is the word? Power dissipated. So who dissipates the power? Resistance. Capacitor and inductor, they are wattless device. They don't consume energy. So उसमें तो power dissipate होने का chance ही नहीं है. समझ में आई बात? So हाँ. So only R is used. But you can calculate other way around also. $7.9. बोलो. Suppose the frequency could be varied. कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा? If frequency of the source could be varied in the previous sum, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा, ये पूछा है. तो कैसे करेंगे? Not maximum frequency. It is one particular frequency. It could not be more. It could be not be less. You have got a formula. Omega 0 equal to 1 by root LC. ये फार्मूला. Okay. Put down the value and you will get answer 222.1 रेडियन पर सेकंड. इस फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे तो रेजोनेंस होगा. ओके. अब जब रेजोनेंस होगा तो इम्पीडेंस कितना रहेगा? सर अगर कैपेसिटर अगर इंडक्टर लगा के प्लस कर देते प्लस. क्या इंडक्टर लगा देते तो इसलिए मैं मतलब हाँ. सो दिस इज अगर इंडक्टर होता तो सिर्फ इंडक्टर होता तो रेजोनेंस होता ही नहीं. रेजोनेंस हैपन्स ओनली व्हेन L and C both are present, either in series or in parallel. C alone or R alone cannot create resonance. Okay. अभी ये B पार्ट देख लो. कैलकुलेट द इम्पीडेंस, करंट एंड पावर एट रेजोनेंस. जब रेजोनेंस होता है तब इम्पीडेंस का वैल्यू कितना रह जाता है? रेजिस्टेंस के जितना. रिमेंबर इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. सो इट विल गो लाइक दिस.
At resonance condition Z is equal to R because XL and XC तो कैंसिल हो गए. R का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ प्लस XL माइनस XC स्क्वायर. तो ये तो रेजोनेंस के टाइम के बोथ वैल्यूज आर सेम, सो ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर Z इक्वल टू जस्ट R, राइट? Okay. So RMS value of current is 0.66.7. Power dissipated is I square R. You can also use V square by R. Hmm. Now see, this power is more. Earlier कितना पावर आया था प्रीवियस सम में? 4800 वाट. और अभी कितना आया? 13.35 किलो वाट. बहुत ज़्यादा है ये 1350 इतना आएगा. Do you understand that? Yes, sir. Okay. How many minutes left? Yes. minute 11. Okay. क्या? Why cos phi is called power factor, not powerhouse, Jayagiri? And it is because, let me why cos phi is called power factor? Look at this formula. This is power formula for AC circuit. Now these two value could be fixed. Now if cos phi value is increasing, power is increasing. If cos phi value decreases, power decreases. So who decides the power dissipated in the circuit? Cos phi. So it is called power factor. Oh, sir, for a particular value, so cos phi will be also constant, na? No. It means for a given circuit, once inductance value and R is there, phi is fixed. So cos phi is fixed. Now to this device, you can supply various voltage and current, right? But in that device, who will determine પતી ગયું સાહેબ હા ભગવાન કોણ ચોપડી અહીં હતી હું તમે વાંચી લીધી? હવે ઘરે મગાવી છે એટલે મેં થેલીમાં મૂકી. હું 2-3 દિવસમાં લઈ આવું પાછું. આમાં ખાટો ને વચ્ચેનો ખબર છે કોણ એ બહાર ગયું ઘરવાળી એ નહીં આગળ આવું હા હું તેમનો મેં મૂકી છે ગણતરી કઈ થઈ મેં થોડી વાંચી હું તો